स्वागत है आपका मास्टरी मैप 2023 लाइफ एक्सेलरेटर में। आज हम बात करेंगे YouTube वीडियो की नहीं, आज हम बात करेंगे वील टॉक अबाउट व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट गोइंग इनटू दिस प्रोग्राम, व्हाट इज दिस अबाउट, हाउ डू यू ओरिएंट योरसेल्फ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ट्रीट दिस लाइक अ वेलकम वीडियो. अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर व्हाट द मूड ऑफ द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एंड वेयर इट इज दैट वी आर ट्राइंग टू गेट. नंबर वन, हमने ये अनाउंस किया था, देन वी सेड दैट दिस इज गोइंग टू हैपन बिटवीन द 22nd January, बट टू अलाउ पीपल मोर टाइम टू डाइजेस्ट, बिकॉज हमने इसमें बहुत एलिमेंट्स ऐड किए एंड आई एम गोइंग टू कम टू दैट. वी डिसाइडेड टू डू इट week 1 2021, week 2 27 28 and then the following week. So Friday Saturday हर वीक के नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए, जब भी ये आपको वीडियो मिलेगी 20th से स्टार्ट करते हुए, वील हैव सेशंस. फ्राइडे को फर्स्ट लाइव सेशन, सैटरडे को सेकंड लाइव सेशन, जो रिपीट होगा फर्स्ट लाइव सेशन का. तो आप पूरे वीकेंड में दोनों में से किसी भी उस पर आके अपना सेशन अटेंड कर सकते हो. हम रिपीट करेंगे सेशंस. दूसरी बात, हमने इसके 2 कंपोनेंट्स आपको बताए थे. वो दोनों कंपोनेंट्स ध्यान में रखना, क्योंकि वो दोनों कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. बट लेट मी इलैबोरेट इन देम अ लिटिल मोर. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज क्लैरिटी, व्हिच वील डू थ्रू द वर्कशॉप. वी विल हेल्प यू सेट अप योर आइडियाज फॉर द नेक्स्ट 1 year, right? The second part is mastery, and mastery is about executing them. And the main metal, well, I would say it's a 50-50 bargain, but mostly people, एक तो क्लैरिटी नहीं होती, फिर उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करते. और एग्जीक्यूट इसलिए नहीं करते क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती, और क्लैरिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि कभी कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया. तो ये एक साइकिल है. इस साइकिल को ध्यान में लेके चलना कि जैसा तुम डे 1 निकालोगे, वीक 1 निकालोगे, मंथ 1 निकालोगे, वैसा ईयर 1 निकालोगे. ये बात समझ के चलना. अब वर्कशॉप हमने 3 वीक्स का कर रखा है. आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना है इस कोर्स से? Number 1, we'll give you tools, and the tools are going to be to the effect that help you sort of get through with the execution part. We'll give you videos that will explain what is important where, pre-recorded videos. We'll give you resources, and these resources are going to be one from us and then crowdsourced, that allow you to get an intro into the various things that you should be thinking about. I've let better people than me, smarter men than me, experts talk about it, ताकि तुम्हारा इंट्रो बने. उसके बाद क्यूरियोसिटी तुम्हें खुद चेस करनी होगी. ये बात तुम्हें पता है. अगर तुम आज तक दरबार में बैठे हो, तुम्हें ये बात पता है. Finally, there's going to be a community, and the community, I highly suggest you talk to each other, make friends with each other. मैंने अपनी लाइफ में अगर एक चीज जेन्युइन लेजिटिमेट लेवल पे, मतलब जिसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर पे समझिए, वो ये, अगर तुम्हें कुछ करना है, अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करो जो वो कर रहे हैं. काम खत्म. और तुम लोग सब यहां पे अपनी लाइफ बेहतर कर रहे हो. काम खत्म. तो इनसे बात करो, इनके एलिमेंट्स को अपने एलिमेंट्स के साथ फ्यूज होने दो, इनकी एफर्विसेंस को अपनी एफर्विसेंस के साथ मिल जाने दो, और देखो ऑटोमेटिकली किस तरीके से एक्शन करना और इजी होता चला जाता है. वी आर वेरी एनिमलिस्टिक, वी कंपेयर एंड वी एक्ट, एंड सो व्हाई वुड यू वांट टू कंपेयर इन अ बैड वे व्हेन यू कैन बी फ्रेंड्स एंड देन डू इट टुगेदर, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू टू डू. The third thing, and this is going to be slowly becoming more of my motto in life. Personal level पे I don't know मैं कब ready होऊंगा इस बारे में social level पे बात करने के लिए, but तुम लोगों से, नजदीकी लोगों से इस बारे में बात कर सकता हूं. ब्रो, mediocrity unacceptable है आउटकम लाइफ में. ऐसा नहीं होता एक आदमी सब चीजों में नॉन मीडियोकर होता है. तुम बहुत चीजों में मीडियोकर रहोगे, बट जो तुम्हारे दिन की सबसे इंपॉर्टेंट, सोलफुल, स्पिरिचुअली सेंटर्ड, फिलोसॉफिकली अलाइंड, साइकोलॉजिकली रियल एफर्ट है, चाहे वो फैमिली को प्यार करने में, चाहे वो काम करने में, उसमें तुम मीडियोकर नहीं हो सकते, वरना तुम नहीं खेले हो ढंग से. मैं समझता हूं ये सब माया है, पर अब माया है तो ना खेलें क्या? अब खेलते हैं ना, अब मजा आएगा, ये जानते हुए कि ये माया है. इस चीज को ध्यान रखना. मीडियोक्रिटी इज अ नॉन आउटकम. हजारों लाखों की भीड़ खड़ी है बाहर. तुम और मैं वो नहीं होंगे भाई. हमको देखने आएंगे वो लोग, तुम और मैं वो नहीं होंगे. ये बात मेरी तरफ से आपके लिए क्लियर. अच्छा, the way we will begin is we will send you an assignment 0, and it should reach you around the 15th, if not sooner, the 15th of January, and you're supposed to do that. I will put a video in the same location जहां पे इस असाइनमेंट को एक्सप्लेन भी किया होगा. वैसे भी असाइनमेंट काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा. आपको ये असाइनमेंट करने के लिए या तो अपने लैपटॉप पे करना होगा या आपको अपने मोबाइल डिवाइस पे करना होगा. बहुत मुश्किल नहीं है, पर सोचना पड़ सकता है, अपने साथ बैठना पड़ सकता है, अपनी फीलिंग्स के साथ और अपने, लेट्स से, अपने नैरेटिव के साथ बैठना पड़ सकता है. नैरेटिव इज गोइंग टू बी अ की कंपोनेंट वील टच अपॉन वेरी सून, राइट? एंड सो it might be that things are a little difficult while you're doing it, but welcome to the fucking journey, guys. That's the point. Okay. The next thing is that the format of the program is going to be such, and I have to read this out, so forgive me. Every Thursday you'll receive the assignment.
इस असाइनमेंट के अलावा वीक 1, वीक 2, वीक 3 के जो असाइनमेंट होंगे वो हर थर्सडे को मिलेंगे। उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी और कुछ सपोर्टिंग एसेट्स होंगी, कुछ सपोर्टिंग रिसोर्सेज होंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर। यहां पे आई एम ट्राइंग टू फॉलो अ मॉडल ऑफ एजुकेशन दैट इज वेरी सिमिलर टू हाउ दे टीच एट आईवी लीग्स, वेयर listen, this is your stuff to be done and thought about before you come to class. We will not discuss this stuff in class. We will not go over the theoretical part. We'll begin to think and act. We'll begin to go further than what people have, right? So that is what we'll do. The second thing is every Friday we'll have session 1 and we'll talk about the assignment. We'll do the assignment together. We'll think about it. We'll answer questions. We'll go about the whole routine, right? And then Saturday we'll have a repeat. Now, Ansh, please put timings of those things here so people know exactly what time to expect these sessions to happen. और संडे से लेके ट्यूसडे तक फिर आप FAQs डाल सकते हो कम्युनिटी में। कम्युनिटी का लिंक भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है कम्युनिटी पे हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। अगर आप कोई भी सेशन मिस करते हो कोई टेंशन मत लेना, आपको सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप उस सेशन को देख के साथ साथ उस सेशन को देखते देखते वो काम कर सकते हो जो आपको करना है। जब आप सेशन में आओ एक्टिविटी ओरिएंटेशन के साथ आना। जब भी आपके पास हो 1-1.5-2 घंटा बैठने को तभी आना। और मैं इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखने को आपको बोलूंगा क्योंकि कई लोग बिजी होते हैं, बट ब्रो ये साल की शुरुआत की इन्वेस्टमेंट है, पूरे साल पे ऑफ करेगी ये चीज। हमारा पर्पस ये है इस चीज से निकलते हुए तुम्हें अपना साल बिल्कुल क्लियरली दिख रहा हो, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा हो कि ये करना है मेरे को इस साल। रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबल हो, अगर चेंज हो रहा है तो चेंज हो ब्रो, अब अनसीन सर्कमस्टेंस है क्या करें, लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि अच्छा ये ऐसे 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 करना है। और फिर उसको एक्ट अपॉन कर पाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हो, टूल्स हो, ताकि आप इस साल के एंड में फोड़ो और हमें हाथ मिलाने आओ तो हम ताली मारे बोले ब्रो वेल डन। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नाउ we'll talk about mindset, and more than mindset we'll talk about the narrative of the self. And if any of you have consumed Confidence on Command or Decamind, I've spoken about this quite a lot because this is probably the most foundational idea you should know when it comes to improving how your life looks like. And this is not just in the sense of a self-help or the sense of a philosophical, spiritual sort of, but in every sense of the word. Humans are storytelling creatures and we are story producing creatures, and we produce stories all the time also inside our head. It's a non-stop process that we are kind of hijacked by, and you'll see this happen on a very day-to-day level. Say you walk into a room and the room's full of things and you walk out and I ask you what did you see, you will come up with the story instantly, and in that story what you will delineate, what you will express is what did you see first, what was the most important, most catchy thing to you, and the second thing and how it was related to the first, and you start bridging facts together to make a narrative. This is what news does, and therefore news is never really unbiased because facts are like beads. Narrative is the thread that makes it into a necklace, and the necklace is what you wear when you consume news, right? And so we are doing something very similar with us at all points in time. And you can look at it. Let me give you another example, okay? Say you have a bad breakup. Say your father is very angry for a year. Say you have no money when you are 18 and 19, right? And in those days you think, dude, shit man, life's so hard. And life's very hard. It obviously is. And so you say it, life's so hard. You think about it. You tell your friends, dude, life's hard. You walk with the recognition that life's hard. And then what happens one day is that 10 years down the line you've made enough money. 10 years down the line you have a very beautiful family. Whatever, XYZ, ABC. 10 years down the line you live where you wanted to live, let's just say. Right? When you look back at that time and you're like, dude, that was fantastic. I learned so much from that. And so what has happened essentially is that as time has gone on, you have accumulated more beads with which you've built a better necklace than before. And narratives work like this all the time. Now, very often in the self-help genre of things, in the positivity, spirituality genre of things, people will ask you to always be like this. तू अपने आप को डिल्यूट कर ले, तेरे दिन खराब है, तू अपने आप को डिल्यूट कर ले, तू अपने आप को बिल्कुल तू पॉजिटिव रहे। और उसका एक मेरिट है, जब आपके बुरे दिन चल रहे हैं और बुरे दिन चलने वाले हैं, जब टफ टाइम्स हैं और टफ टाइम्स चलने वाले हैं, तो चिन अप माय लैड, वी आर वॉकिंग स्ट्रेट होम, वी आर नॉट स्टॉपिंग। आई अंडरस्टैंड, बट इट इज नॉट फीजिबल फॉर, let's say, less than catastrophic times to believe in something like that. For a more average day-to-day person, which I would say is 80% of the distribution where I think you fall and I fall and most of us do, we have to think about it a little differently. And so what we have to do, what is this level 2 thing? Level 1 is positivity. Okay, I get it. You know, peace, sure, right? Bad times, I got peace, I got positivity. Now what? The second step is understanding your narrative. Understanding your mindset. And these are interchangeable terms I use here, but they're not quite interchangeable in all its senses. So let's look at first what mindset is. Mindset, my bros, is let's say the unconscious control panel of your mind. बाहर की दुनिया में बतेरी चीजें हो रही हैं,
एक अनकॉन्शियस पैनल है, कंट्रोल पैनल, बाहर का इनपुट आता है, वो उसमें प्रोसेस होता है और अंदर एक नैरेटिव बनता चला जाता है, स्टोरी, एक इंटरनल रियलिटी क्रिएट होती चली जाती है। तो एक एक्सटर्नल रियलिटी है, बीच में एक प्रोसेसर है माइंडसेट, और अंदर एक नैरेटिव चल रहा है, वो मेरी इंटरनल रियलिटी है। लेट मी गिव यू अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल। थिंक अबाउट अ डिफेंडर फुटबॉल में। You all know footballers. Think about any defender. Let's think about Sergio Ramos, who's one of the most famous defenders in the world, who's been around for the last 10 years. Okay. Ramos is a defender. When he's on the field, he has no time to think. He's reacting. He's basically playing in flow. And when he's playing in flow, he's playing with the mindset of a defender. So when he gets a ball, before he thinks कि इसको मैं goal की तरफ मारूं, he's like, clear the ball, head it out, right? Pass it to a midfielder. That's his base unconscious mindset programming, right? अगर मैं उसको स्ट्राइकर लगा दूं, देयर इज गोइंग टू बी इंस्टेंसेस वेयर ही शुड हैव शॉट द बॉल, बट उसने पास कर दिया, बिकॉज उसकी अनकॉन्शियस लेवल पे माइंडसेट उसका ये है, द सेटिंग्स ऑफ हिज ब्रेन आर दिस। एंड फॉर अ लॉट ऑफ अस, वी हैव अ वेरी लिमिटिंग माइंडसेट. Our narratives are actually very depreciated and discouraged. And look, for a lot of us, it's also not our fault, man. तुम्हारे सर्कमस्टेंस ऐसे, तुम बच्चे ऐसे थे, तुम्हें आसपास वाले लोगों ने मजाक उड़ाया, माँ बाप ने प्यार नहीं दिया, जो भी, ठीक है. फलाना तेरा बड़ा भाई गुस्से में रहता था, वो तेरे को मारता रहता था, तेरा हो गया यार, अब तेरा इंटरनल नैरेटिव ऑफ हो गया, तेरा माइंडसेट सेफ्टी का बन गया. तेरे घर वाले लड़ाई करते थे, ठीक है, तेरे को दोस्त कोई नहीं बनाता था, खेलने कोई नहीं बुलाता था. आई गेट इट, फाइन, बट नाउ व्हाट डू वी डू? And so that is what you need to understand, is that at all points in time you're living inside this reality that is produced by the mindset and narrative part of things, and the external reality is happening parallelly. So there are two things that constitute what is real for you. One is what is actually happening. Two is the interpretation of it, the story of it. And it is very often in life that हो सकता है बाहर की रियलिटी फाड़ हो, बट अंदर की रियलिटी कचरा है, तो वो बाहर की रियलिटी की एम्पलीफिकेशन ढंग से हो ही नहीं रही. सक्सेस में तुम 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 10 पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि इंटरनल रियलिटी कचरा है. मैं डिजर्व ही नहीं करता. कितने लोग होते हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दो, वो ले ही नहीं पाते, उनको लगता है वो डिजर्व ही नहीं करते. क्यों नहीं करते? भगवान के बंदे हो भाई. कितनी खुशी की बात है, इतना लोड क्यों लेना है? वो माइंडसेट बन जाता है चीजों का. बचपन से गालियां खाने की आदत है, कैसे ले लूं भाई कॉम्प्लीमेंट, कहां से ले आऊं? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट दैट इज सपोज टू मीन. सो what you have to understand is, over a period of time, we need to alter the way you look at the world. Andrew Tate, who I've come to criticize quite a lot, has a very powerful statement with respect to this that can help a lot of people. He says, I refuse to believe in things that make me less powerful. Now, it's a power-centric approach, sure, but it's a very valid approach in the material world. I will only believe in things that make me powerful. It could be a delusional episode completely. He could be like, but it's still a very powerful thing to believe in. And that is what we'll try and do. We'll first try and understand what your narrative's made out of. With this assignment, what we're trying to essentially get at is, how is it that you've looked at your past and your present? How does you, Rahul, Anish, whatever your name is, whoever is sitting across and listening to this video, how have you ended up here? What has happened and how do you see it? And what do you process with it? Let us get an understanding. And you'll realize once you start processing, which is the base point of therapy, right? The base point of therapy is processing. Say it in a way that fits so that you never have to think about it again. That is overthinking. What do you do when you're overthinking? You're coming up with a narrative. You're altering your mindset. You're altering the settings of your mind. मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने उसे ऐसा क्या बोल दिया कि वो छोड़ के चला गया, right? You're altering the settings of your mind to produce a narrative that fits. And that's what we're trying to do. We are trying to only at first, begin to understand what is a narrative about you that fits. And so you know what you've come to believe in and where it fits in the picture of your cognition, of your mind, of your thinking. This is the first step to recognizing who you are, where you are at, and then we will begin to think where you are going to go. Okay? Are you ready? This is going to be a journey. You have to be ready. You've chosen the tough path. You've decided this year is not going to be easy. You've said to yourself, I will do as I'm supposed to do because I have responsibilities, because I am a man of this world and I'm willing to play the game of the world. I'm not going to cop out. I'm not going to let myself be a coward. I'm not going to hide in a corner when the world's fighting. I'm going to be the man in the arena, and I'm going to be no one else except the guy or the girl that gives it his or her all. We don't stop. We ask for what is ours. Right? You deserve it. You deserve some level of success. You deserve some level of happiness and peace. You deserve all of that, bro.
Let nobody stand in the way. There is always a way. That's the beauty of the modern world, man. There is always a way. There is always a way. And we are not giving up, not right now at least. तुम तो अभी निकले हो जेबों से 18, 19, 20, 21 साल के. तुम कैसे गिव अप करोगे? मतलब ही नहीं है. हो ही नहीं सकता. तो आओ, चलते हैं. Let us go on this journey. As far as the narrative part of the whole thing is concerned, we are going to begin with the past. And the reason why understanding the past, or at least the immediate past, because the past moves in cascades, bro. What is happening to you today is a consequence of what has happened to you over the last year. And so it is almost like saying, जैसे F1 में होता है ना, जहाँ तुम finish करते हो अगली बार वहाँ से शुरू करते हो. So you finished 2021 somewhere, you started 2022 somewhere, and therefore the effect of 21 is cascaded upwards into 2022 and 2022 into 2023. And part of it is because your mind requires some amount of cognitive consistency. It wants कि जो मैं कल था वो मैं आज रहूं वरना मैं हूं कौन. And you have to understand something about your mind. Your mind hates the idea of infinity. It does not understand it very well. It does not understand what it means for everything to exist all at once. It breaks at that moment. Therefore it needs definition. Therefore you will find us with this unavoidable need to have binaries with everything. It is because our mind needs to address and say things and make it one, make it two, but make it no more than three. Like this is this unconscious desire we carry within ourselves. You can't help that. So the past is a very interesting point, because when you look at the past, most of only what you remember is things that impacted you. Everything else is somewhat processed. And the things that impacted you have a fat tail. This is a statistics idea, which is that 3 things that impacted you, only 3 out of 500 things that impacted you over the last 1 year, have such a huge impact. They're a fat tail. They're at the bottom, but they're so thick in their effect. And so we will somehow end up always talking about fat tails, both good and bad, right? You could have won a lottery this year, bro. So one event that changed your entire life, 5 crore rupees khali pade ghar pe, right? Or you could have really had a bad breakup, or you lost a competition you really wanted to win. You feel like you've entered a place you don't know how to handle yourself in. You've entered a new college, you entered a new city, a new job, and like, oh, fat tail event, You will know what your fat tail events are. But the point is, unless you spend time enough to describe and decipher those things, the narrative of your past, you will never quite know where you are in the present. And if you do not know where you are in the present, moving into the future is next to impossible. This is the limbo most people are in. जब ऐसा होता ना, तुम अभी से एक बार इमेजिन करो, तुम आज 20 के हो, तुम कल 45 के हो. कुछ लोग हैं तुम्हारे साथ आज जो बहुत आगे चले गए, कुछ लोग वहीं के वहीं रह गए सेम चीज करते हुए. उनकी प्रॉब्लम ये है, उन्होंने पास्ट को कभी समझा नहीं, तो वो पास्ट को अनकॉन्शियसली रिपीट करते रहे. दे वर अ स्लेव टू देयर पैशंस, दे वर अ स्लेव टू देयर लेसर सेल्व्स, देयर इड इन अ फ्रॉइडियन सेंस. दे वर अ स्लेव टू थिंग्स दैट वर प्रोग्राम्ड इनटू देम बिफोर दे न्यू व्हाट दोस थिंग्स वर. एंड टुडे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सम पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग, some element of how your mind's made. This is engineering on a psychological level, right? Say you had brilliant moments over the past 1 year, good and bad, and now you're at a place where you're like, अब मेरे को फ्यूचर में क्या करना है. बट तेरे को फ्यूचर करना कहाँ है? रियलिटी में, बाहर की दुनिया में, दिस मटेरियल यूनिवर्स जहाँ पे ये सब चीजें हैं, प्रखर है ना, ये बाहर की दुनिया. ये बाहर की दुनिया जो है ना, ये टेरिटरी है, ये दुनिया है बाहर की. जो तेरी लैंग्वेज है ना, वो मैप है. अब इस मेटाफर को समझने पे तुम बहुत चीजें समझ सकते हो जीवन में. The difference between a measure and the thing, or the map and the territory. It's a good, very interesting concept to have in your repertoire, in your pocket. भाई मेरे सामने एक लैपटॉप है, लेफ्ट में एक स्क्रीन है, एक माइक स्टैंड लेफ्ट में लगा है, एक माइक स्टैंड राइट में लगा है, एक गिम्बल है, एक लाइट है, कैमरा है, एक उसे क्या कहते हैं भाई, जो वो डिब्बा होता है, एक डिब्बा सा है, 2 फोन है, एक चश्मा है, एक चश्मा पहन रखा है, एक रिमोट कंट्रोल है, काफ़ी ऑक्यूपाइड टेबल है, इधर भी सामान है. अब मैंने ये लैंग्वेज में एक मैप क्रिएट किया है इस रियलिटी का. और इसमें तो मैंने सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पॉइंट किए हैं, बट तुम किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन देख लो वर्बली, किसी भी टाइप का कहीं पे भी देख लो, वो एक लेवल पे रियलिटी को डिस्क्राइब ही कर रहा है ना. वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है. जिस तरीके से मैप एक्चुअल टेरिटरी नहीं है. तुम अमेरिका का मैप देख के अमेरिका नहीं समझ सकते, अमेरिका जाके अमेरिका समझोगे, बट वो मैप डिस्क्राइब कर रहा है अमेरिका कैसा है. And so very often what happens is you are stuck in a place, you don't know what is up, and you've never figured out, you've never sat down and asked yourself, how have things changed me? How have things impacted me? How do I want things to be in the future? You've never given yourself the time. And this is why this exercise is important, for you to understand where your past is at. And the best part about this exercise is we've guided you throughout. We've put the pointers in the prompts, you just need to answer them. And you'll slowly begin to see, when you sleep after writing one, fuck.
That is the beauty of figuring out your past. In fact, that is the beauty of proper articulation. When people ask me, Prakhar, how do I articulate better? Start with your past. Start with your present. Articulate it. Chase down the very instinct of your mind as it appears in your head, and you'll see you'll get very good at it. Words then become tools. Words then become weapons sometimes, right? It's a very interesting place to be, to use the most, let's say, God-given technology humans have and use it to its maximum. So that is what we're trying to do. And the one measure at which you will understand whether your past has been processed or not is if you've forgotten about it.